Hello students, the question is, the electric flux is phi equals to alpha sigma plus beta lambda, where lambda and sigma are linear at surface charge density respectively. Alpha upon beta represents option 1 charge, option 2 electric field, option 3 displacement and option 4 area. So the problem is based on the concepts of units and dimension and the basic formula of electrostatics of linear and surface charge density. So here the given expression is phi equals to alpha sigma plus beta gamma, and we have to find out that what is alpha upon beta represents, what is the nature of this ratio, whether this is of charge, whether this is having a unit of electric field, whether this ratio is having the unit of displacement or area. We have to find out that. Now, according to the basic concepts of units and dimensions, we can easily see that the dimension of phi is equal to dimension of alpha sigma, and this is equal to the dimension of beta lambda. And we have to find out the dimensions of basically alpha upon beta. So that's why we can identify it matches with which one of these four quantities. So now from this particular equation, we can calculate the dimension of alpha as dimension of phi upon dimension of sigma, and beta dimension is equal to dimension of phi upon dimension of lambda. Now we have to find out this ratio alpha upon beta. We have to find out in terms of ratio. So alpha upon beta, this dimension comes out to be, from these equations, this comes out to be dimension of phi upon dimension of sigma upon dimension of phi upon dimension of lambda. Now this cancels with this phi cancels basically, so we need not to worry about the dimension of phi here because it cancels out in the division process, and we get this expression as dimension of lambda upon dimension of sigma. Now lambda is the linear charge density. Linear charge density means charge per unit length. So the dimension of this is charge per unit length, and similarly the surface charge density is having the equation, is having the formula as charge per unit area. This is the formula. So the dimension of sigma is the dimension of q upon a. Now in this way this q cancels, and what we get is we get the dimension of a upon l, like this. Now a is basically, area is basically L square, so L square upon L, so this comes out to be L, which is the dimension of a displacement. So out of these four quantities, third option is correct here, displacement is correct option here. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, इसमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का phi इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा गामा. यहाँ पे लैम्डा और सिग्मा लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं. हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फा अपॉन बीटा किस टाइप की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इन फोर में से कौन सी क्वांटिटी से रिजेंबल या मैच होता है. तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि फाई की जो डायमेंशन होगी, यानी फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी, वो बराबर होगी डायमेंशन ऑफ अल्फा सिग्मा के, और वो बराबर होगी डायमेंशन ऑफ बीटा लैम्डा के. यहाँ से क्योंकि हमें रेशियो निकालना है अल्फा अपॉन बीटा का, तो इसलिए हमने इंडिविजुअली पहले इन दोनों को साथ लेते हुए, फाई और अल्फा सिग्मा को लेते हुए पहले अल्फा कैलकुलेट करा जो आया फाई अपॉन सिग्मा. इसी तरह से बीटा कैलकुलेट करा जो आया हमारा इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों बेसिकली टर्म से, तो ये आया फाई अपॉन लैम्डा. फिर उसके बाद हमने अल्फा अपॉन बीटा कैलकुलेट किया, इससे हमारा फाई कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए हमें फाई की जो डायमेंशंस हैं उनको पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये प्रॉब्लम ईजियर हो गई उससे. फिर उसके बाद हमारा लैम्डा जो है न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और सिग्मा जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा. लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो उसके लिए उसकी जगह हमने लिख दिया चार्ज पर यूनिट लेंथ, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी. यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्योंकि डिवीज़न में क्वांटिटीज़ हैं तो क्यू फिर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ए जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और एल जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ए की जगह हमने एल स्क्वायर लिख दिया, एल की एक पावर कैंसिल हो गई, और फाइनली जो है हमें लेंथ की डायमेंशन मिलती है, जो कि ध्यान से अगर हम देखें तो इन चारों में से थर्ड ऑप्शन यानी डिस्प्लेसमेंट से मैच होती है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. So the correct option is option third, displacement. Hope you understand the explanation. Thank you.